प्रोसीजर देखते हैं, ये जो वेंटूज़ या वैक्यूम एक्सट्रैक्टर होते हैं और जो फोर्सेप होते हैं। देखो सबसे पहले फीटल हेड की पोजीशन क्या है, तो ये तो आपको पता होना पड़ेगा, तभी आप काम कर सकते हो। थॉरो एब्डोमिनल विजन एग्जामिनेशन शुड टेक प्लेस टू कंफर्म द फीटल लाई, presentation, engagement, station, position, attitude, and degree of capital modeling. This will confirm whether or not the basic safety criteria for OVD have been met or not. A careful pelvic examination is essential to determine whether there is any mechanical contraindication to performing OVD. यानी कि cephalopopatic disposition है अगर, तो फिर तो होने का ही नहीं है. If for example a contracted pelvis is the cause of failure to progress in secondary, then due to consideration must be paid to determine the type of instrument to be employed or whether it may be more prudent to perform a C-section. The shape of the subpubic arch, the curve of the sacral hollow, and presence of flat or prominent ischial spines all contribute to the decision to whether a vaginal delivery may be safely performed. Anthropoid, narrowed, android, male funnel shape, or private pelvis all make instrument delivery more difficult and may preclude the use of rotational forceps. A trial push is very helpful in determining whether descent is possible, and it may also be possible to attempt manual rotation of fetal malposition at this point. Analgesia requirements are greater for forceps than for ventouse. Whether rotational forceps or mid-pelvic direction traction forceps are needed, regional analgesia is preferred. For a rigid cup ventouse delivery, a potential block with perineal infiltration may be all that is needed, and if a soft cup is used, analgesic requirement may be limited to perineal infiltration with local anesthetic. अभी आगे हम डिस्कस करेंगे. A requirement for haste should not preclude the use of analgesia. No operator would consider performing a C-section without the appropriate anesthesia, and the same should be true for OVD. तो उसी तरीके से इनका ध्यान रखना है एनाल्जेसिया का positioning. OVD treatment performed with a patient in lithotomy position. The angle of traction needed requires the bottom part of the bed be removed. In a patient with limited abduction, such as those with symphysis pubis dysfunction, it may be necessary to limit abduction of the thigh to a minimum. It is operator's duty to ensure that bladder is emptied. कंटीजेंसी प्लानिंग का मतलब ये है कि अगर पता है कि साथ में इसके और प्रॉब्लम हो सकती हैं, पीपीएच हो सकती है, सीजर सेक्शन करना पड़ सकता है, शोल्डर डिस्टोसिया हो सकता है, तो इनको मैनेज करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा. अब इंस्ट्रूमेंट टाइप पहले बात करते हैं वेंटूज, जिसको वैक्यूम एक्सट्रैक्टर्स भी बोलते हैं. कभी खाली वैक्यूम मत बोलना, वैक्यूम एक्सट्रैक्टर या वेंटूज बोलना. द बेसिक प्रीमाइस ऑफ अ वैक्यूम एक्सट्रैक्टर इज दैट अ suction cup, a cielastic or rigid construction is connected by a tubing or to a vacuum source. इस तरीके से होते हैं और either directly through the tubing or बस वो ठीक है, कोई बात नहीं. Presenting part cord with maternal pushing to expedite delivery. Recent developments have removed the need for cumbersome external suction generators that have incorporated the vacuum